Hello, everybody. I hope everybody is happy, safe, and healthy. I would love to begin this podcast by thanking each and everybody who makes time to come back to my podcast from the busy schedule. And here you are listening to me. So, really, thank you so very much. Let us begin today's first topic. I am going to share with you how I developed a reading habit. I also made a reel about it quite a while ago on my Instagram handle. How are the benefits of reading multiple books together? So you can also go check it out once you are free. You can go and check out my handle Tanvi Artaide on Instagram. All right. So let us address the elephant in the room. Let me tell you, I was never a reader. I was filled with these limited beliefs कि जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी मोटी मोटी novels पढ़ते हैं या जिन्हें पटर पटर इंग्लिश बात करना आता है, those people are supposed to be respected and they are knowledgeable and मेरा immediately confidence जो है कम हो जाता था. So I used to try very hard to develop this reading habits. कोई कहता था कि रोज़ अखबार पढ़ो, कोई कहता था कि आपके टेक्स्ट बुक्स पढ़ो. And I used to get multiple ideas and multiple क्या बोलते हैं guidances on how to develop a reading habit, but none resonated with me. But I was seeking to develop this habit nonetheless. On one fine day, when I went with my friends in college in a movie theater, I got sucked into this rom-com movie so much कि it just impacted me on a very higher ground. And then I saw the name of the movie and the author. I also saw कि उसमें लिखा था that this movie is based on a book by author Sophie Kinsella. So the movie was Confessions of a Shopaholic. I immediately hunted for Sophie Kinsella's books in crossword. I picked up one of the books एंड दैट इज़ अ डे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने रात को 8 बजे वो बुक पढ़ना शुरू किया होगा. मैं सुबह 4 बजे तक वो बुक पढ़ रही थी. आई लाफ्ड, आई क्राइड, आई फेल्ट इमोशंस while रीडिंग विच was so very new to me, and I finished the book, and it's only then when I slept all happy. That was one day which was a very big mystery for me, because for 19 years I was trying to start reading बुक्स एंड नॉवेल्स. आई यूज टू गेट इंटिमिडेटेड बाय पीपल कि जो नॉवल पढ़ते हैं वो करते क्या है, एक जगह बैठ के पढ़ते कैसे हैं. एंड आई फाइनली हैड डन दैट, एंड दैट वाज लाइक अ विनिंग मोमेंट फॉर मी. उसके बाद जो है चालू हो गया चक्कर. आई स्टार्टेड बाइंग सोफीज बुक्स. कन्फेशंस ऑफ अ शॉपaholic की सारी सीरीज़ मैंने पढ़ ली, उनकी बाकी के नॉवेल्स मैंने सारी पढ़ ली. एंड देन जब मुझे फाइनली थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, आई स्टार्टेड पिकिंग अप सम ऑफ द क्लासिक्स, जैसे केन एंड एबल हो गया, या फिर 5 पॉइंट समवन हो गया, या फिर और भी जो अलग अलग क्लासिक्स रहते हैं वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. एंड देन आई एब्सोल्युटली स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ रीडिंग. उसके बाद तो पीछे मुड़ना देखना ही था. आई ऑलवेज हैड अ बुक विथ मी टू रीड. एंड देन just a year ago, I entered this beautiful world of self-help and mental health. I became so very interested that I started seeking knowledge for self-help books. But I'll tell you, and let me be very honest, I was facing a huge problem in reading these self-help books. बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट जा रहा था रेजोनेट करना. 2 पेज के ऊपर मैं पढ़ नहीं पा रही थी. I was finding the words difficult. Mind you, I have read over 70-80 books by now. In the past, I think 12 और 13 ईयर्स मैंने 70-80 बुक पढ़ लिए हैं, जो एक नॉन रीडर के लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं. ओके. एंड देन आई केम अक्रॉस वन ऑफ द मेंटर्स. उन्होंने बोला कि बेटा आपको है ना हमेशा एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन, यू विल ऑलवेज रीड इट टुगेदर. सो जैसे हमारे हिंदी और सीरियल्स होते हैं, 7 से 7:30 एक सीरियल है, 7:30 से 8 दूसरी सीरियल है, तो वैसे ही बुक्स के साथ ही करना है. तो समझ लो मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही हूँ और उसके साथ मैं सोफी किंसेला की सीक्रेट ड्रीम वर्ल्ड ऑफ अ शॉपaholic पढ़ रही हूँ. तो अगर मैं 5 पेजेस एटॉमिक हैबिट्स के पढ़ूंगी तो मैं 5 पेजेस सोफी किंसेला के भी पढ़ूंगी. And then I'll sit back and reflect. Why? Because it is my favorite genre. So the non-fiction book that you're picking up, it has to be of your favorite genre. And don't be judgmental about yourself कि अरे यार पूरी दुनिया सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ रहे हैं और मैं क्या यहाँ गज़लें पढ़ रही हूँ, पोएम्स पढ़ रही हूँ, रोम-कॉम नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ. No guys, reading is reading. It's going to enhance your knowledge.
Just be proud of yourself that you're making time to read ना. There are so many reading clubs, there are so many accountability groups. वो ज्वाइन किए बिना ही आप ये काम शुरू कर सकते हो. बस एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन नॉवल जो है साथ में पढ़ना है. ऑल्टरनेटिवली आई स्टार्टेड गेटिंग इवॉल्व. मुझे जो है ऑडिबल के बारे में पता चला, स्टोरी टेल के बारे में पता चला, दिस ब्यूटिफुल एप्स. सो आई सब्सक्राइब टू देम. So the third book, usually I don't read. I always listen to that book. And I'm being very, very careful about the books that I listen to. They are specifically by those thought leaders whom I love to follow in their voices. तो जो impact पड़ता है ना कि ये particular so and so thought leader है, वो अपनी ही voice में अपनी book को आपको सुना रहा है या सुना रही है, the impact that you get in your subconscious mind, it's amazing. It's just amazing. So ये भी try करके देखना. This is how I developed my reading habit. And मैं क्या करती थी, after I finish each and every book, I give myself time to sit and reflect and resonate. So for example, मैंने Palace of Illusions जब पढ़ी, that book made a very heavy impact on me. It's a very famous book. If you get hold of it, please read it once. It made so much impact कि मैं एक महीना I was just self reflection में ही मैं चली गई थी. So don't be afraid or don't be very very tensed कि if a book has made so much of impact on you, is it the right thing. कभी कभी हम overwhelm में चले जाते हैं. So don't let that happen. And yes, any self-help book that you pick up to read today is always going to help you, because that person is sharing their knowledge of their struggles. That doesn't mean कि हमें सबके struggle और solution के बारे में पढ़ना है. We also have to enjoy ourselves, right? So this is a tip that I wanted to share today. एंड येस, इफ़ यू आर ऑल्सो नॉन रीडर, कोई बात नहीं यार, आप सुन रहे हो ना मेरे पॉडकास्ट को, दैट इज़ मोर देन इनफ. डू फॉलो दिस टिप, डेवलप दिस हैक ऑफ starting to read from today. This is from my own personal life experience. I hope it helps you too. Lots of love and power to everybody, and all the credit to my mentors.